Hello friends, my name is Dr. Dron Trivedi. I am being a tutor in a pharmacology department, which is a second year MBBS subject at BJ Medical College, Ahmedabad. I have passed my MBBS from PDU Government Medical College, Rajkot. And during those days of my undergraduation, I was teaching NEET UG to many students like you. Okay, from my point of view, the teaching, the scientists and doctors are the very noble professions, and I am very fortunate that I am being a part of teaching and doctors. Okay, and मुझे ऐसा लगता है कि the doctors and teachers are the two professions that are lifesavers. Yeah, teaching can be life saving because I feel that the 11th and the 12th standards of any student's life are very important for their career, and also those years are very vulnerable phase of any student's life. Okay, and if you are getting a good teacher in that phase, it can be a life changing, a life saving moment for you always. Okay, so I am very fortunate that there are many students I have taught in that phase, and also very fortunate that I have learned so many things from my students also. So that was a portion where I as a person also grow. Okay, so I find the teaching my passion, and I am very fortunate that it is also being my profession, and I wish a very good luck to all of you. So we are quickly start our topic of today, which is neurotransmission in human physiology. Okay, so I give you a personal suggestion that please go through with the topic of the structure of a neuron before listening this lecture. Okay, because if you are having a good knowledge of structure of a neuron, then it can be very helpful for this topic also. Okay, we are definitely gonna discuss the structure of neuron in a brief, but still you go through with that. Okay, so as you can see in the figure, that in a neuron there are main three parts. Okay, the first is a cell body, okay, in which there is a nucleus. Okay, and in the peripheral region of that cell body there are small fibers present, and they are called dendrites. Okay, after that cell body there is a long fiber present. Okay, and that is called axon. And axon the further divides in a smaller branches, in which at the last there is a swelling, and that is called a synaptic node. Okay, so this is a structure of a neuron. Okay, so there is an interesting fact there, that the first neuron and the second neuron are in no physical contact. Okay, there is no physical contact between the synaptic node of the first neuron and the dendrites of the second neuron. Okay, and that gap is called a synapse. That gap is called a synapse. And also for your knowledge, that this synapse usually are of the distance of 200 angstrom, 200 angstrom. Okay, angstrom is 10 raised to 10 raised to minus 10. Okay, so 10 raised to minus 10, the 200 angstrom is the physical gap between two neurons. Okay, so we have two types of synapse. One is a chemical synapse and the another one is a electrical synapse. Okay, electrical synapse, the transmission through the electrical synapse is very much similar to the transmission through an axon. Okay, that is a completely different topic, and we have already discussed that topic, that how the neurotransmission occurs through axon. Okay, but in brief I will tell you that in that case the axon is having more negative charge inside and more positive charge extracellularly. The potassium concentration is more inside, the sodium concentration is more outside, and when depolarization occurs, the sodium channels opens, the sodium influx occurs, and that will generate action potential, which is in that case this will be called impulse. Okay, so
our topic of interest is chemical synapse. Okay, because in human physiology, or we can say human neurology, the chemical synapse is seen more and it is more important. Okay, there are many types of neurotransmitter, but our interest of neurotransmission will be acetyl neurotransmitter will be acetylcholine. Okay, acetylcholine. So we are going to discuss in detail about the chemical synapse in humans. So let's start with that. Okay, so as you can see in the figure, at the upper end there is a swelling. Okay, that swelling is called synaptic node, and the plane you can see at the downside, it is post synaptic membrane. That is a dendrite. Okay, that is a dendrite of the second neuron. Okay, so we can say that there is a physical gap in between both of them, and which is called a synapse. Okay, so the structure before the synapse, okay, we will call it as a presynaptic node. We will call it a presynaptic node, and the structure coming after the synapse, we will call it as a postsynaptic membrane. We will call it as a postsynaptic membrane. So whenever the impulse comes from the axon to our presynaptic node, there is a presence of calcium channels at the presynaptic node. Okay, so whenever the impulse comes, this calcium channels opens, and whenever this calcium channel open, there is influx of calcium. Okay, so the calcium जो है वो बहुत सारे एक साथ अंदर आते हैं. जैसे ही कैल्शियम जो है वो कैल्शियम चैनल्स ओपन होता है, कैल्शियम अंदर आते हैं, तो ये जो हमारा जो प्रीसाइनेप्टिक नोब है उसके अंदर डीपोलराइजेशन होता है. ठीक है, जो डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास जो प्रीसाइनेप्टिक वेसिकल्स है, आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये वेसिकल्स क्या होता है. ठीक है, तो वेसिकल्स जो है वो छोटे छोटे से पॉकेट्स है. ठीक है, वो छोटे छोटे से पॉकेट्स है कि जिसके अंदर हमारा केमिकल सब्सटेंस, मतलब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब इस टॉपिक के लिए हमारा एसिटाइल कोलाइन. ठीक है, तो जो एसिटाइल कोलाइन जो है वो इस वेसिकल के अंदर स्टोर्ड होता है. ठीक है, जैसे ही हमारा साइनेप्टिक नोब के अंदर डीपोलराइजेशन होता है, ये जो वेसिकल्स है वो टूट जाती है, और ये जो वेसिकल टूट जाती है उसकी वजह से हमारा केमिकल ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, वो हमारा साइनेप्स के अंदर रिलीज हो जाता है. जैसे ही हमारा एसिटाइल कोलाइन हमारे साइनेप्स के अंदर रिलीज होता है, हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन से स्ट्रक्चर का पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेकंड न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ सेकंड न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स. सो हमारा जो एसिटाइल कोलाइन है वो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आए हुए एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है. सो जैसे ही ये एसिटाइल कोलाइन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, हमारा जो दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, उसके अंदर के डेंड्राइट्स के अंदर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है, और जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होती है, वो जो है वो दूसरे न्यूरॉन के अंदर इंपल्स को जनरेशन करती है, इंपल्स का जनरेशन करती है. डीपोलराइजेशन होते ही हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हमारा इंपल्स है. ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ द फर्स्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन गेट ट्रांसफर्ड टू सेकंड वन. ओके, सो ये एसिटाइल कोलाइन उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, दूसरा जो न्यूरॉन है वहां पे सोडियम चैनल्स ओपन हो चुकी है, और वहां पे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, और वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और हमारा इंपल्स का ट्रांसमिशन हो चुका है. ठीक है, अब जो यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन पड़ा हुआ है हमारा, वो एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज नाम का एक एंजाइम है जो हमारे साइनेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है. वो हमारे एसिटाइल कोलाइन को एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड और कोलिन जो है वो थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम किसको बोलते हैं? इन एनी ट्रांसपोर्ट वेयर एटीपी इज यूज्ड, और वी कैन से that we are transferring a substance from its low concentration to high concentration, we use ATP. Okay, so यहाँ पे हमारा जो एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम है उसने हमारे एसिटाइल कोलाइन को डिवाइड कर दिया है एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर, और ये जो दोनों सब्सटेंस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फिर से प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर एंटर हो जाते हैं. वहां पे फिर से वो वेसिकल में जाते हैं, और वहां पे उन दोनों में से एसिटिक एसिड और कोलिन में से हमारे एसिटाइल कोलाइन का रीजनरेशन होता है. ठीक है,
तो ये जो सिनेरियो है वो हमारे पैसे फिर से जो पहली सिचुएशन थी वैसा फिर से हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ट्रांसमिशन न्यूरो ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू अ केमिकल साइनेप्स। वी विल गेट अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस। हमारे पास जो एक्सॉन है, उस एक्सॉन में से इंपल्स का ट्रांसमिशन हमारे प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर हुआ। जैसे ही प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर इंपल्स आया है, वहां पे कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाती है। जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होती है, वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स करती है और अब जो साइनेप्टिक नोब है हमारा, वहां पे डीपोलराइजेशन होता है। जैसे डीपोलराइजेशन होता है, वो जो हमारी वेसिकल्स है वो टूट जाती है। जो वेसिकल्स है वो एसिटाइल कोलाइन, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको स्टोर करके रखी है, ठीक है। डीपोलराइजेशन की वजह से ये वेसिकल टूट जाती है। ये एसिटाइल कोलाइन जो है वो हमारे साइनेप्स के अंदर रिलीज होता है और वो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वहां पे बाइंड हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पे बाइंड होती है, तो जो दूसरा न्यूरॉन है अपना, वहां पे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है और दूसरे न्यूरॉन के अंदर डीपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और जिसकी वजह से इंपल्स का ट्रांसमिशन हो चुका है, ठीक है। मतलब कि हमारे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना होने के बावजूद भी जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारा केमिकल सब्सटेंस है एसिटाइल कोलाइन, वो हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ठीक है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ केमिकल साइनेप्स, ओके। जैसे ही जो एसिटाइल कोलाइन हमारा साइनेप्स के अंदर प्रेजेंट है, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास साइनेप्स के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। वो हमारे एसिटाइल कोलाइन को एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर डिवाइड कर देता है और उसका रीअपटेक होता है। कहां पे रीअपटेक होता है? प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर, ठीक है। वहां पे फिर से वो वेसिकल में जाती है और यस डू रिमेंबर दैट जब ये रीअपटेक होता है, इट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच द एटीपी विल बी यूज्ड, ओके। सो जैसे ही हमारा रीअपटेक होता है, वो फिर से एसिटाइल कोलाइन एसिटिक एसिड और कोलिन जो है वो हमारे वेसिकल के अंदर जाता है और वहां पे उसका रीजनरेशन होता है एसिटाइल कोलाइन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर केमिकल साइनेप्स वर्क्स, okay. So that's all for this topic, okay. And we will definitely gonna discuss more topics in human physiology in much detail with vast knowledge and better understanding. So stay tuned with us, and thank you very much for listening me out. Have a good day and good luck for your preparation. Thank you.